पृष्ठ 173 परियोजना 2 कालिदासस्य साहित्य साधना आमुखम महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य गगने एक नक्षत्र इव प्रतिभाति अस्मिन् प्रकल्पे वयं तस्य साहित्यकृति काव्यशैली साहित्य प्रभावादीन् विस्तारेण ज्ञातुं शक्नुमः। तस्य साहित्ये केवलं अलङ्काराणां छन्दसां वा संग्रहमात्रं न अपितु मानवजीवनस्य गाम्भीर्यं परम्परा अपि तत्र दृश्यते। अस्मिन् प्रकल्पे कथं च सः सर्वयुगेषु पाठकेषु आकर्षणं संजनयति इति अपि ज्ञास्यामः। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्यस्य श्रेष्ठ साहित्यिकः सः कविकुलगुरुः इति अपि कथ्यते। तस्य समयकाल निश्चितरूपेण निर्णयः अतीव कष्टकरः। संस्कृत साहित्यस्य प्रतिशाखायां तस्य अवाधविचरणम् जनश्रुतानुसारेण कालिदास उज्जयिनी इति नगरे महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। कालिदास विरचितं कोट अभिज्ञानशाकुन्तलम् अनकोट संस्कृत साहित्ये श्रेष्ठ नाटकरूपेण स्वीकृतम् अस्ति। तेन रचितं दूतकाव्य कोट मेघदूतम् अनकोट पृथक् काव्यधारायाः साहित्यं भवति। कालिदासस्य साहित्ये प्राचीन भारतवर्षस्य विविध राजवंशस्य सुस्पष्ट परिचयं प्राप्यते। समाजस्य विभिन्न चरित्राणि तस्य रचनायाः पात्रपात्रीरूपेण स्वीकृतानि भवन्ति। तेन विरचितः ग्रन्थः यथा गीतिकाव्यद्वयम् कोट ऋतुसंहारम् अनकोट कोट मेघदूतम् अनकोट महाकाव्यद्वयम् कोट रघुवंशम् अनकोट कोट कुमारसंभवम् अनकोट नाटकत्रयम् कोट मालविकाग्निमित्रम् अनकोट कोट विक्रमर्वर्षयम् विक्रमोर्वशीयम् अनकोट कोट अभिज्ञानशाकुन्तलम् अनकोट प्रकल्प कार्यस्य उद्देश्यं महाकवि कालिदासस्य जन्मस्थानं जीवनं काव्यनिर्माणं च इत्यादि विषये वयं ज्ञातुं शक्नुमः। कवेः रचनाकौशलम् अलङ्कारोपरिवेशनं चरित्रचित्रणं येति विषयेषु कथं चमत्कारम् आवहति तदपि ज्ञातुं शक्नुमः।
সাত, এক, এটা এক আর এটা সাত না আট। এটা আট, চার পাঁচ ছয় সাত আট, তাহলে 18। দুই আট, এটা হচ্ছে এক, আবার লিখে নিই। এটা হচ্ছে এক, এটা হচ্ছে নয়, আর এটা হচ্ছে এক, অল্প স্থান সাত, সাত, এক নয়। পৃষ্ঠা 175। মহাকাব্যম রঘুবংশম রামকথা অবলম্বনেন রচিতং রঘুবংশমিতি মহাকাব্যে 19 সংখ্যাকাः सर्गाः वर्तन्ते। रघुवंशस्य काहिनीम् अवलम्ब्य विरचितम् इदं महाकाव्यं। संस्कृत साहित्य जगते महाकाव्यधारायाः यथार्थ कविकृति रघुवंशमिति। 11 सर्गात् 15 सर्गपर्यन्त राम काहिनी वर्णिता। 16 सर्गात् आरम्भ 19 सर्गपर्यन्तं रामचन्द्रस्य परवर्तिना राज्ञां कथा संक्षेपेण विवृता अस्ति। कुमारसम्भवम् महाकवि कालिदास विरचितं कुमारसम्भवमिति महाकाव्ये 18 संख्यकाः सर्गाः वर्तन्ते। अस्मिन् महाकाव्ये शिवपार्वत्योः विवाहः
च कुमारस्कन्दस्य जन्म च निरूपित। यौवने प्राप्ते पार्वती देव्या पतिरूपेण देवदूतो नारद शिवस्य नाम प्रस्तावयति। पार्वती महेश्वरं प्राप्तयो कठोरो तपस्या मग्ना। पार्वती महेश्वरं प्राप्तयो कठोरो तपस्या मग्ना भवति। तत्परं हरपार्वती विवाहो संपन्न भवति। पंचात् कार्तिकेय जायते। नाटकं मालविकाग्निमित्रं कालिदास विरोचितं पंचांक नाटकं मालविकाग्निमित्रं। विदिशाराज अग्निमित्र विदर्भ राजकन्या मालविकायाश्च प्रणय काहिनीम् आधारीकृत्य नाटकम् एतत् रचितम्। पृष्ठा 176। अग्निमित्र नृत्य परिवेशनं करति। अंतःपुरे नृपेण सह मालविकाया साक्षात्काले उभयोः पूर्वरागः घनीभूतः भवति। नायक नायिकयोः प्रथम साक्षात्काले इरावती तत्र उपस्थिता। पुनश्च विदूषकस्य चातुर्येण नायक नायिकायोः मिलनेच्छापूरणकाले इरावत्या उपस्थिति कारणात् विघ्नः भवति। तत्परं मालविकाया राजवंशसम्बन्धः प्रकाशते। सा राजकन्या इति ज्ञायते। अन्ते राज्ञी धारिणी तयोः मिलनं अनुमन्यते। राजा अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रणयः परिणतः सञ्जातः। विक्रमोर्वशीयम्। विक्रमोर्वशीयम् कालिदास कृतं कोट विक्रमोर्वशीयम् इति पंचांक नाटकं राजा पुरुरवा उर्वशयः च प्रणय काहिनी अस्य नाटकस्य विषय। उर्वशी राज्ञा सह गभीर प्रेमेण आबद्धा भवति। आचार्यस्थ अभिशापवशात् सा स्वर्गलोकं परित्यज्य मर्त्यवासी भवति। उर्वशी पुरुरवायाः सान्निध्यं लभते। तयोः सन्तानः अजाते अन्यत्र वर्धितः। तयोः सन्तानः अज्ञाते अन्यत्र वर्धितः। अकस्मात् पुत्रः आयोः दर्शन पश्चात् उर्वश्याः स्वर्गगमनकालः उपस्थितः भवति। देवदानव संग्रामकाले पुरुरवा स्वर्गात् आह्वानं प्राप्नोति। संग्रामे देवगणस्य विजयलाभात् परं नायक नायिकायोः पुनर्मिलनं भवति। अभिज्ञान शकुन्तलम् महाकवि कालिदास विरोचितं सप्तांक नाटकम् अभिज्ञान शकुन्तलम् महाभारतीय काहिन्यवलम्बनेन रचितम् इदं नाटकं। नायकः राजा दुष्यन्तः, नायिका च शकुन्तला। नायको नायिकायोः प्रेम विवाहश्च अस्मिन् नाटके प्रतिपाद्य विषयः। दुष्यन्ते सह शकुन्तलया विवाहात्। दुष्यन्ते सह शकुन्तलया विवाहात् पर शकुन्तला दुर्वासा मुनिना अभिशप्ता भवति।
प्रियंवदाय च अनुसूयाय प्रयासेन अभिशाप लघुकृत अभिज्ञानभरणं दृष्ट्वा शापस्य प्रभाव दूरीभूतं भवति। यदा आसन्न प्रसव शकुन्तला दुष्यन्तं निकषा प्रत्याख्याता तदा ज्योतिर्मयी नारी मूर्ति शकुन्तलं नीत्वा अंतर्हित भवति। घटनाक्रमेण मारीचाश्रमे सपुत्र शकुन्तलाया सह पुनर्मिलनं परिलक्षितम्। দুটি ছবি এখানে লেখার পাশে রয়েছে। পৃষ্ঠা 177। তথ্য সংগ্রহ। ময়া এতাদৃশং কার্য সাধয়িতুং বিভিন্নেভ্যः গ্রন্থেভ্যः তথ্যং সংগৃহীতম যথা। 1. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 2. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপক যুধিষ্ঠির গোপ। 3. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপক ডক্টর গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনম। অহম ড্যাশ ইদানীম দ্বাদশ শ্রেণ্যাং পাঠরতঃ পাঠরতা अस्मि। द्वादश श्रेण्यः प्रकल्परूपेण कोट कालिदासस्य साहित्य साधना अनकोट इति विषयं मया स्वीकृतवान् स्वीकृतवती। इदं प्रकल्पकार्य समापयितुम् अस्माकम् आचार्य आचार्या उत्साहं जनयित्वा प्रयोजनीयं तथ्यञ्च प्रदाय सहायतां कृतवान् कृतवती। अहं तं तां कृतज्ञतां स्वीकरोमि। शिक्षकस्य शिक्षिकायाः हस्ताक्षर, छात्रस्य छात्रायाः हस्ताक्षर।